Hello everyone. Today we will solve real analysis first question paper. Okay. Then our question 1 is A. Express the following statement using quantifier limit x tends to a f of x is equal to L. इसका आंसर है लिमिट x टेंस टू ए f of x इज इक्वल टू L. हमें यहाँ पर लिमिट की डिफिनेशन एक्सप्रेस करनी है, जैसे कि लेट f of x be defined for all x is not equal to a over an open interval containing a. Let L be a real number, then limit x tends to a f of x is equal to L. If for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that if 0 less than mod of x minus a less than delta, then we will satisfy this equation mod of f of x minus L less than epsilon. This is the question 1 answer. Then our question B is if a is equal to set of x such that x greater than 4 and b is equal to set of x such that x less than equal to 7, then find b minus a. our a सेट हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि सेट 1 2 3, क्योंकि x is greater than 4, okay, does not greater than equal to 4, so a is equal to set of 1 2 3 and our b set is x less than equal to 7, so 1 to 7 number are collected in set b. Then we find b minus a is equal to b minus a. तो a के एलिमेंट कौन कौन से 1 2 3 1 2 3 सब्ट्रैक्ट किया है तो बाकी क्या रहेगा 4 5 6 7. b माइनस ए इज इक्वल टू, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि सेट x सच दैट 4 लेस देन इक्वल टू 7. ओके. देन our question C is using definition of limit prove that limit n tends to infinity 1 upon root n plus 1 is equal to 0. तो हमें गिवन क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द गिवन. सो Sn की वैल्यू क्या है, Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ n प्लस 1. देन लिमिट हमें लिमिट दिया गया है, लिमिट L इज इक्वल टू 0. देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम यहाँ पर लिमिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन. सो मॉड Sn की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट n प्लस 1 माइनस हमारी लिमिट है 0 लेस देन एप्सिलॉन. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. सो अब हम इसे मॉड के बाहर लिख देंगे जैसे कि 1 अपॉन रूट n प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज रूट n प्लस 1 अपॉन रूट n से छोटा है. ओके. तो हम इसके बदले में 1 अपॉन रूट n भी लिख सकते हैं. सो 1 अपॉन रूट n लेस देन एप्सिलॉन. टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 1 अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N. अब हम n और एप्सिलॉन स्क्वायर को इंटरचेंज कर देंगे जैसे कि 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर लेस देन n, इक्वेशन नंबर 2. देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N. सो n को हम अब देयर एग्जिस्ट कैपिटल N greater than equal to 1 upon epsilon square belongs to I. Then we will satisfy equation number 1. Hence limit n tends to infinity 1 upon root n plus 1 is equal to 0, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है. Then our question D is define limit n tends to infinity inferior of Sn. तो हमें यहाँ पर inferior लिमिट की definition लिखनी है. तो inferior लिमिट की डेफिनेशन है लेट सीक्वेंस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दैट इज बाउंडेड बिलो एंड यहाँ पर स्मॉल m n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस Sn प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन. तो हमें पूछा है लिमिट n tends to infinity inferior of Sn. Okay. तो if set of small m n
n is equal to 1 to infinity converges, we define limit n tends to infinity inferior of Sn is equal to limit n tends to infinity Mn. This is the convergence. And B is if sequence Mn n is equal to 1 to infinity diverges to infinity, we write limit n tends to infinity inferior of Sn is equal to infinity. Okay, this is the definition of inferior limit. Then our next question is, does the sequence 1 upon root n is equal to 1 to infinity belongs to L2? Justify. मतलब ये सीक्वेंस लिमिट L2 में क्लास L2 में बिलोंग्स होती है क्या नहीं, ये हमें जस्टिफाई करना है. जैसे कि हमें गिवन क्या है, सीक्वेंस Sn n इज इक्वल टू 1 to infinity इज इक्वल टू सीक्वेंस 1 upon root n इज इक्वल टू 1 to infinity. So Sn is equal to 1 upon root n. Then squaring on both sides, summation n is equal to 1 to infinity Sn square is equal to 1 upon n. Then n की वैल्यू जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आएगा. Hence sequence 1 upon root n does not belongs to L2. Okay, this is our justification. Then our question F is, show that the series summation n is equal to 1 to infinity 3n upon n plus 1 is divergent. Okay, so summation n is equal to 1 to infinity 3n upon n plus 1. तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, summation n is equal to 1 to infinity an is equal to summation n is equal to infinity 3n upon n plus 1. तो हमारी an की वैल्यू क्या है, 3n अपॉन n प्लस 1. वो हमने यहाँ पर लिख दी. अब इस वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1. तो हमें क्या मिलेगा, 3 अपॉन 2. देन इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 2. देन हमें मिलेगा 6 अपॉन 3. देन वी विल पुट 3. देन 9/4. 3/2 is less than 6/3 is less than 9/4. There was sequence n is equal to 1 to infinity is non-decreasing sequence and limit n tends to infinity an is equal to limit n tends to infinity 3n upon n plus 1. an की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी. Therefore limit n tends to infinity 3n, यहाँ से हमने n कॉमन लिया. सो अंदर क्या बाकी है, 1 प्लस 1 अपॉन n. यहाँ का n और यहाँ का n एक कैंसिल हो गया. इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n. सो यहाँ पर होगी वैल्यू 0, मतलब 3 अपॉन 1 प्लस 0. 3 इज नॉट इक्वल टू 0. हेंस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3n अपॉन n प्लस 1 इज डाइवर्जेंट. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज G. Define absolute convergence of series of real number. Absolute convergence of series of real number. If sequence of real number sequence Sn n is equal to 1 to infinity has the limit L, we say that sequence Sn n is equal to 1 to infinity is convergent sequence to limit L. एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर लिखा है, Sn is equal to 1 upon n. This is the example of absolute convergence series of real number. Then our next question 2a. First, if S is countable set and R is a subset of S, then prove that R is empty or R is finite or R is countable. So suppose question 2a first का आंसर है, suppose R is non-empty set. Okay, right. S is equal to set S1 S2 up to so on Let J1 be the smallest positive integer such that J1 belongs to R. Okay, then let J2 be the next smallest
Let j2 be the next smallest positive integer such that yes j2 belongs to R. Continue in this way if process terminates at nth step, that is R is equal to yes j1, yes j2, yes j3, up to so on yes jn. Then R is finite, that is countable. If process does not terminate, then we obtain elements of R as 1 tends to sj1, 2 tends to sj2 and 3 tends to sj3 and so on etc. All elements of R counted in fashion. Since jl is greater than equal to L, then cardinality of R is equal to cardinality of N. Therefore, R is countable. Then our question 2a second question is prove that the set of integer z is countable. So इसका आंसर है हमें यहाँ पर इंटेजर z मीन्स इंटेजर ये काउंटेबल दिखाने के. So our natural number is 1, 2, 3, 4 up to so on and integer z हमारे इंटेजर पॉजिटिव और नेगेटिव 0 ये तीनों भी होते हैं, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जैसे कि 1 कनेक्टेड इन 0, 2 इज कनेक्टेड इन 1, 3 इज कनेक्टेड टू, मतलब ऑल z. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं f फ्रॉम z गिव z डिफाइंड बाय f. हम एक फंक्शन लेते हैं जैसे कि f ऑफ n इज इक्वल टू n अपॉन 2 व्हेन n इज इवन एंड f of n is equal to minus n minus 1 upon 2 when n is odd. N is similar as to z. Therefore, hence z is countable. Then our next question is question 2b. First question, show that the set of all sequence on 0 1 is countable, is uncountable. Question 2b second question, if function f a gives b and a1 comma a2 is subset of a, then prove that f of a1 union a2 is equal to f of a1 union f of a2. इसका आंसर है first we want to show that f of a1 union a2 is subset of f of a1 union f of a2. तो हम पहले f ऑफ a1 यूनियन a2 इसे सबसेट दिखाएंगे किससे, f ऑफ a1 यूनियन a2, f ऑफ a1 यूनियन f ऑफ a2. लेट x बिलोंग्स टू, हम x एक वेरिएबल लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू f ऑफ a1 यूनियन a2. देन f हम f को यहाँ पर लाएंगे तो हमें f इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा, जैसे कि f इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू a1 यूनियन a2. सो दैट हम इसे अब सेपरेट लिख देंगे, जैसे कि f इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू a1 एंड f इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू a2. देन गिव्स x बिलोंग्स टू f, फिर से यहाँ पर जाएगा x बिलोंग्स टू f ऑफ a1 और x बिलोंग्स टू f ऑफ a2. हेंस अब हम इसे यूनियन में लिख सकते हैं, जैसे कि x बिलोंग्स टू f ऑफ a1 यूनियन f ऑफ a2. तो हमारी x की वैल्यू क्या है, f ऑफ a1 यूनियन a2. तो हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, f ऑफ a1 यूनियन a2 बिलोंग्स टू f ऑफ a1 यूनियन f ऑफ a2. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. टू प्रूव द रिवर्स इंक्लूजन फॉर्म, अब हमें इसे रिवर्स इंक्लूजन फॉर्म में लिखते a1 a2 इज सबसेट ऑफ a1 यूनियन a2 वी गेट. अब हम इसे फंक्शन में लिख देंगे, f of a1 f of a2 इज सबसेट ऑफ f of a1 यूनियन a2. सो दैट अब हम इसे यूनियन में लिख सकते हैं, f of a1 यूनियन f of a2 इज सबसेट ऑफ f of a1 यूनियन a2. This is our equation number 2. From equation 1 and 2, f of a1 union a2 is equal to f of a1 union f of a2. Hence proof. Okay. Then our question 3a, define bounded sequence of real numbers. Prove that every convergent sequence is bounded. Okay.
So first we will define bounded sequence. Definition of bounded sequence: a sequence is said to be bounded if and only if its range is bounded. That is, the sequence Sn n is equal to 1 to infinity is bounded if and only if there exists m is greater than 0 such that mod of Sn is less than equal to capital N, n belongs to I. अब हम एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड इसका प्रूफ देखेंगे. Proof: suppose sequence Sn n is equal to 1 to infinity is convergent sequence to limit L. That is, limit n tends to infinity Sn is equal to L, n belongs to I by theorem. For given epsilon is equal to 1 is greater than 0, we must find n belongs to I such that mod of Sn minus L less than 1, n is greater than equal to capital N. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब हम मॉड Sn माइनस एल को सेपरेट लिख देंगे, जैसे कि मॉड ऑफ Sn माइनस मॉड एल लेस देन 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N. हमने मॉड ए माइनस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी इसकी सहायता से लेकर हमने इसको ऐसे लिखा है. ओके, मॉड गिव्स मॉड Sn लेस देन ए मॉड एल, यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जाकर वो प्लस हो जाएगा. मॉड Sn लेस देन 1 प्लस मॉड एल एल n is greater than equal to capital N. Then next, now considering the finite numbers of terms of the sequence. For n is equal to 1 to n minus 1, तो हमने यहाँ ए रेंज लिखे. लेट कैपिटल M इज इक्वल टू सीक्वेंस S1, S2, S3 अप टू Sn माइनस 1. कंसिडर Sn इज इक्वल टू, ये हमने कंसिडर किया है L प्लस Sn माइनस L. ओके, अब हम इसे सेपरेट लिख देंगे, जैसे कि लेस देन इक्वल टू मॉड L प्लस मॉड Sn माइनस L, लेस देन इक्वल टू मॉड L प्लस 1 प्लस m. Sn माइनस L की वैल्यू है 1 प्लस m. तो हम इससे therefore mod Sn is equal to m dash. Hence sequence Sn n is equal to 1 to infinity is bounded. Then our question 3a, second question: if Sn n is equal to 1 to infinity is a sequence of real number which converges to L, then prove that sequence Sn square n is equal to 1 to infinity converges to L2. So इसका आंसर है नहीं सॉरी ए प्रूफ है. ओके, तो प्रूफ क्लेम, पहले हम क्लेम लिख देंगे. फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देर एग्जिस्ट n सच दैट मॉड ऑफ Sn स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लेस दैन एप्सिलॉन n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल N. देयरफॉर अब ए स्क्वायर है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो हम वैसे ही इसे लिख देंगे मॉड ऑफ Sn माइनस एल इंटू मॉड ऑफ Sn प्लस एल लेस देन एप्सिलॉन n is greater than equal to capital N. Since sequence Sn is convergent to capital L, therefore limit n tends to infinity Sn is equal to L. For given epsilon greater than 0 there exists, हम यहाँ पर n1 कंसिडर करेंगे, there exists n1 such that mod Sn minus L less than epsilon upon m plus mod L n is greater than equal to capital N1. This is our equation 1 and sequence Sn is bounded sequence. There exists a m belongs to R such that mod Sn mod Sn less than equal to capital M, n is greater than equal to n2. Mod Sn plus L less than epsilon upon m plus mod L, n is greater than equal to n2. This is our equation number 2. Choose mod of Sn square minus L square is equal to Sn माइनस एल इंटू Sn प्लस एल. अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसे कि Sn माइनस एल की वैल्यू है एप्सिलॉन अपॉन m प्लस मॉड एल एंड Sn प्लस एल की वैल्यू है m इंटू m प्लस मॉड एल. ये दोनों सेम में वो कैंसिल हो जाएंगे. देयरफॉर
mod Sn minus Sn square minus L square less than epsilon. Therefore limit of Sn square is L2, that is limit n tends to infinity Sn square is equal to L2, hence prove. Then our next question is question 3b. First question, let S1 is equal to root 2 and Sn plus 1 is equal to root 2 into root Sn for n is greater than equal to 2. Prove that sequence Sn n is equal to 1 to infinity is a convergent sequence. तो हम इसका प्रूफ देखेंगे. पहले हम गिवन लिख देंगे S1 इज इक्वल टू रूट 2 एंड Sn प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट Sn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. पहले ये तो बहुत ही छोटा आंसर है इसका आंसर. तो हम पहले यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह जो कुछ भी पता है वो लिख देंगे. ओके. First, we know sequence Sn is bounded and we have sequence Sn is monotonically increasing. So, we know that monotonically increasing bounded sequence are convergent. Thus, sequence Sn is convergent. Then, second point, limit n tends to infinity Sn is equal to L. Now, this is our theorem. Then, हम इसे Sn प्लस 1 को भी ये लिख सकते हैं. सो वी हैव Sn प्लस 1 इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू दी गई है. क्या है हमारी वैल्यू? रूट 2 इंटू रूट Sn स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. ओके. एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या आएगा? Sn प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू Sn. इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. And taking limit as n tends to infinity on both sides, limit n tends to infinity Sn plus 1 bracket square is equal to limit n tends to infinity 2 into Sn. So Sn plus 1 की वैल्यू क्या है? L. So gives L square is equal to 2. 2 is constant, so 2 into limit n, L2 and L are cancel, gives L is equal to 2. L की वैल्यू है हमारी limit n tends to infinity Sn is equal to 2, hence sequence Sn n is equal to 1 to infinity is convergent. Then our question B is second question is, suppose sequence Sn n is equal to 1 to infinity is a sequence of positive real number and 0 less than x less than 1. If sequence Sn plus 1 less than x into Sn n belongs to capital N, then prove that n tends to infinity Sn is equal to 0. Suppose sequence Sn n is equal to 1 to infinity is a sequence of positive real number and 0 less than Sn plus 1 less than x into Sn less than x cube Sn minus 2 less than x raised to 4 Sn minus 3 up to so on less than x raised to n plus 1 minus k into sk. So हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0 लेस दैन Sn प्लस 1 लेस दैन x रेज टू n प्लस 1 x रेज टू माइनस k इंटू sk. इसे हमने सेपरेट लिख दिया. 0 लेस दैन Sn प्लस 1 लेस दैन. अब इनवर्स को डिनोमिनेटर में लिख देंगे sk अपॉन x रेज टू k इंटू x रेज टू n प्लस 1. लेट sk अपॉन xk इज इक्वल टू c, मतलब कांस्टेंट. ओके. देन 0 लेस दैन Sn प्लस 1 लेस दैन c इंटू x रेज टू n प्लस 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी. 0 लेस दैन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn प्लस 1 लेस दैन c constant into limit n tends to infinity x raised to n plus 1. Since x less than 1 limit n tends to infinity x raised to n plus 1 is equal to 0. Therefore 0 less than limit n tends to infinity Sn plus 1 less than 0. So हम अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, limit n tends to infinity Sn plus 1 is equal to 0. Then that is limit n tends to infinity Sn is equal to 0. Then
और क्वेश्चन 4 इज फर्स्ट क्वेश्चन, if summation n is equal to 1 to infinity an is a convergent series of real number, then prove that limit n tends to infinity an is equal to 0. आज हमने जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उसे उसकी प्लेलिस्ट बनाकर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, सो आप वहाँ पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4a का आंसर है, सपोज summation n is equal to 1 to infinity an is convergent to a belongs to R, that is summation n is equal to 1 to infinity an is equal to capital A. Let Sn is equal to a1 plus a2 plus up to son an be the nth partial sum of summation n is equal to 1 to infinity an. Limit n tends to infinity Sn is equal to capital A. Also limit n tends to infinity Sn minus 1 is equal to capital A, where Sn minus 1 is n minus 1th partial sum of summation n is equal to 1 to infinity Sn. So अब हमें Sn minus 1 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेनी है। तो Sn की वैल्यू क्या है, a1 प्लस a2 प्लस अप टू सन an माइनस Sn माइनस 1 हम किससे लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 प्लस अप टू सन an माइनस 1 प्लस an। जब हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेंगे तो क्या बचेगा, an। देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn माइनस इसने लिमिट से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1 इज इक्वल टू इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, a माइनस a इज 0, limit n tends to infinity an is equal to 0, hence proof. Then our next question is question 4a, second question, state and prove Minkow's inequality. Proof, suppose sequence Sn n is equal to 1 to infinity and sequence Tn n is equal to 1 to infinity belongs to L2. Okay, then summation n is equal to 1 to infinity Sn square less than infinity less than summation n is equal to 1 to infinity Tn square less than infinity. Therefore, by Scott's inequality, summation n is equal to 1 to infinity Sn into Tn converges absolutely. अब हम इसे Sn प्लस Tn ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब हमें इन सबको समेशन देने हैं, जैसे समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Sn प्लस Tn ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Sn स्क्वायर प्लस 2 इज कॉन्स्टेंट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Sn इंटू Tn प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Tn स्क्वायर gives summation n is equal to 1 to infinity Sn plus Tn bracket square is convergent, gives Sn plus Tn belongs to L2. Then again by Scott's inequality, this is our Scott's inequality, mod of summation n is equal to 1 to infinity Sn into Tn less than equal to first bracket is summation n is equal to 1 to infinity Sn square raised to 1 by 2 into summation n is equal to 1 to infinity Tn square raised to 1 by 2. By equation summation n is equal to 1 to infinity Sn plus Tn bracket square less than equal to 2 into summation n is equal to 1 to infinity Sn square raised to 1 by 2 into summation n is equal to 1 to infinity Tn square raised to 1 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity Tn square. Therefore, summation n is equal to 1 to infinity Sn plus Tn bracket square less than equal to summation n is equal to 1 to infinity Sn square raised to 1 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity Tn square raised to 1 by 2 whole bracket square. अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो हमारा
फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity sn स्क्वायर प्लस टी एन स्क्वायर रेज टू 1/2 लेस देन इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity sn स्क्वायर रेज टू 1/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity टी एन स्क्वायर रेज टू 1/2. Hence mean cause inequality is proved. Then our question, next question is question 4b. First question, show that the series summation n is equal to 1 upon n is divergent. तो हमें 1 upon n divergent दिखाना है. Let summation n is equal to 1 to infinity a n is equal to summation n is equal to 1 to infinity a n की वैल्यू क्या है 1 upon n. a n is equal to 1 upon n. a into 2 raised to n is equal to 1 upon 2 raised to n. इसमें हम यूज़ करेंगे बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट. तो बाय उसका फॉर्मूला क्या है, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू n इंटू a इंटू 2 रेज टू n इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू n जैसे के जैसे लिखते हैं. a रेज टू 2n की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 रेज टू n. 2 रेज टू n गेट कैंसिल. समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1. तो यहाँ पर वैल्यू क्या है इन्फिनिटी. सो given series is divergent, hence by Cauchy condensation test, therefore summation n is equal to 1 to infinity an is divergent. Then our next question is question 4b. Second question, test the convergence of the series. First is summation n is equal to 1 to infinity n raised to 4 upon n factorial. तो इसका आंसर है पहले हम इसे यहाँ पर बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट, यहाँ पर रेशियो टेस्ट यूज़ करते हैं. पहले हम ए एन लिख देंगे. तो हमारे ए एन क्या है एन रेज टू 4 अपॉन एन फैक्टोरियल. और ए एन प्लस 1 क्या है प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 रेज टू 4 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल बाय रेशियो टेस्ट. लिमिट दिस इज अवर रेशियो टेस्ट फॉर्मूला. लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी mod of an plus 1 upon an is equal to limit n tends to infinity mod of an plus 1 value is n plus 1 raised to 4 upon n plus 1 factorial into an की वैल्यू क्या है n raised to 4 upon n factorial. This is denominator, then n raised to 4 is denominator and n factorial is numerator. is equal to limit n tends to infinity. यहाँ से हम n raised to 4 is कॉमन लेंगे. तो अंदर क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन रेज टू 4 अपॉन या अब n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन रेज टू 4 एन रेज टू 4 गेट कैंसिल एंड एन फैक्टोरियल गेट कैंसिल. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन रेज टू 4 अपॉन एन प्लस 1. सो एन की वैल्यू जो हमने इन्फिनिटी लिख दी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0 एंड 0 प्लस 1 इज 1. सो 0 इज लेस देन 1. देयरफॉर समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an converges absolutely. Then our next question is summation n is equal to 1 to infinity 1 plus 1 upon n raised to 2 raised to 2n upon e raised to n. इसका आंसर है लेट ए एन की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 अपॉन एन रेज टू 2n अपॉन ए रेज टू n. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. यहाँ पर हम बाय रूट टेस्ट यूज़ करेंगे. तो हमारे ये हमारा रूट टेस्ट का फॉर्मूला है रूट n मॉड ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट n और यहाँ पर मॉड ऑफ यहाँ पर हमने ये ए एन की वैल्यू पुट की है. तो अब हम इसे मॉड और रूट के बाहर लिख देंगे. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी द ब्रैकेट दिस इज द ए एन वैल्यू एंड दिस इज द पावर ऑफ रूट n. तो हम उसे 1 अपॉन n इससे लिख देंगे. और यहाँ पर हमने क्या किया है यहाँ का n और यहाँ का n इन दोनों को कॉमन ले लिया. तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू 2 अपॉन ई ब्रैकेट रेज टू n
इंटू करली ब्रैकेट रेज टू 1/n। सो यहाँ का n और यहाँ का n गेट कैंसल। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ई। सिर्फ यही वैल्यू यहाँ पर बाकी है इज इक्वल टू। तो हम यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 1 + 0/e इज इक्वल टू 1/e लेस देन 1। देयरफॉर बाय रूट टेस्ट देयरफॉर समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an कॉन्वर्जेस एब्सोल्युटली। आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।